Hello student, this is our second lecture of the class 8 mathematics. Today we discuss about the properties of the rational numbers. The properties of the rational number, the first is topic is the equivalent rational number. Equivalent means any number which is absolutely या जो उसी जैसा हो. जैसे इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें अपन तो यहाँ लिए गए let p and q be a rational number and m be any integer except 0. Then the p upon q is a rational number if we multiply any number via same digits in a denominator and a numerator. The value is called the equivalent value. Such type of numbers, the first property is this the if we multiply a same number in a denominator or a numerator and a denominator, there is a no change in their the value. For example, if we take this, then 1 upon 2 equals to 2 by 4. Okay, whenever we cancel out the divided the whole term by the 2, or we can say that we are multiplying this fraction by multiply by 2 and multiply by 2 in denominator and numerator, the same value has been obtained. This is a first property of the equivalent rational numbers. The second property says that if we divided if p and q are any two numbers, q does not equals to 0 and m is a common divisor of p and q, and then if that is a it is a equivalent property of the every number. If we multiply or if we multiply the number if we multiply the same number in a numerator and denominator, there is a no change in there the absolute or the real value. Or if we divided the same number by numerator and denominator, there is a no change in their value. For example, if we take as a 10 by 20 equals equivalent to 1 by 2, it simply means if we divided the 10 by 20 1 upon 10, so we get a 1 upon 2. Or we can say that whenever the cancel was 0 0, the outcome is 1 upon 2. This is the second property number. Third property state that the two rational numbers are the equivalent only when the product of the numerator of first and the denominator of second is equals to the product of the denominator of first and the numerator of second. It states that when we have a two rational number p upon q equals to r upon s, when कभी एक मतलब कंडीशन फॉलो होगी जब द प्रोडक्ट ऑफ देयर पी एंड एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर. यहाँ पे p अपॉन क्यू और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया गया है. जैसे p एंड q को क्रॉस मल्टीप्लाई इस इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे. तो अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये थर्ड प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि टू रेशनल नंबर. यहाँ पे थोड़ा सा और है एक पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स के बारे में. पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कहा जाता है उनको इफ ए एंड बी आर द टू पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव. या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है तो उनको पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे. या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो उससे क्या होगा कि इसके ये माइनस साइन के कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट्स. सो उसे भी अपन कह सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा. और ये if a and b are both positive or are both negative, then the rational numbers called the positive rational numbers. अगर दोनों होंगे तो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा, या दोनों पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो रेशनल नंबर कहलाएगा. और नेगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे कि इफ ए एंड बी आर एनी नेगेटिव नंबर, सो अगर उनमें से कोई एक नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ए अपॉन बी में से वी अगर नेगेटिव है तो पूरा होल रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा. और अगर यहाँ पे आप सेकंड में देख सकते हैं यहाँ ए नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा. सिमिलरली एक और यहाँ पे टॉपिक है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. स्टैंडर्ड मतलब मीन्स होता है कि जो एक परफेक्ट और एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बनाया है कि उसे अपन रेशनल नंबर कहते हैं.
A rational number p upon q is said to be in a standard form. There is a two condition for that. पहली कंडीशन ये कहती है कि q हमेशा पॉजिटिव होगा तो वो रैशनल नंबर होगा, स्टैंडर्ड की है ये। और सेकंड कहती है क्यू पी एंड क्यू हैव नो कॉमन डिवीजर अदर देन वन। इस मीन्स है कि दोनों प्राइम होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हो ही वो। अगर एक नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में वेयर द क्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव and the both are prime because the no common divisor other than one। और सेकंड है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट मींस होता है कि इसको सेकंड फॉर्म में कह सकते हैं मॉडुलस में। एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट इससे करते हैं और इसे मॉडुलस भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि जो भी वैल्यू मॉडुलस या से बाहर निकलती वो एब्सोल्यूट पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इसका सिंबल होता है इस तरीके से, द एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव नंबर और इंटीजर रिमेन्स सेम because whenever the positive value within a mod, the absolute positive integers must be coming out from that. So whenever the positive value is within a mod, the absolutely the positive value is come. Whenever the negative value is within a mod, the absolute positive value has been come. This is known as a absolute value of our rational number, or we can say that this is the absolute value of any number or an integer. Whenever this is called a modulus or a absolute value, when anything, any number, any fraction is between this mod, whenever the mod is removed, the absolute positive value has been coming from this mod.